The Guwahati police have announced traffic restrictions during the Ambubachi Mela 2024. The festival is scheduled to take place from 22nd June to 26th June 2024. The restrictions will be in effect from 5 a.m. on 22nd June until midnight on 25th June. This year, no VIP passes will be issued, mandating all visitors, including VIPs, to queue alongside regular attendees. To manage the expected large crowds, key road closures will be implemented. The main road leading to Kamakhya will close at 8 p.m. and the Pandu Road to Kamakhya Hilltop route will shut down at 9 p.m. daily during the festival period. Transportation and vehicle restrictions. While shuttle services and vehicular movement on Kamakhya main road will be halted, they will remain operational on the Pandu to Kamakhya route. Additionally, only ambulances and utility vehicles will be permitted on these roads, ensuring emergency and essential services remain uninterrupted. Food, water and camp facilities. Strict regulations will govern the distribution of food and water to visitors, with only authorized institutions allowed to provide these services. Several camp facilities have been set up to accommodate pilgrims and police personnel. ये माँ कामाख्या जी का है जो यहाँ पर मेन टेम्पल पहुँच गया। देखिए हम लोग यहाँ पर आगे आए लोग साधु वधु है। चलिए आगे बढ़िए। है ना मंदिर का दरवाजा। श्रद्धालु लोग पीछे से आ रहे हैं। আমাদের অনুসন্ধান কেন্দ্রে এসে যোগাযোগ করুন। এখানে যশোদা বর্মন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। দুবলা নিবাসী প্রদীপ রায়কে অনুরোধ করছি, দয়া করে আপনি আমাদের অনুসন্ধান কেন্দ্রে এসে যোগাযোগ করুন। এখানে যশোদা বর্মন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। जाते रहिए आप लोग, एक ही जगह में खड़ा ना होके आप लोग जाते रहिए। सभी भक्तगण से अनुरोध है कि आप लोग एक ही जगह में ना रुके हुए जाते रहिए। Pompi